Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 7 English textbook, summer pack and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantab Publishers official website. We are going to start our lesson from Unit 5, The Farmer and the Apple Tree. SLOs of this lesson are: analyze paragraphs to identify sentences that support the main idea through definition, example, evidence, illustration, cause and effect. Write a short narrative in the first person which describe events. Use sequential order, specific adjectives and adverbs. Use appropriate tense, appropriate transitional devices. On page number 57 of your textbook, we have a writing section here. The section A here, analyze the last two paragraphs of the story, The Farmer and the Apple Tree, to identify the main idea, definition, transitional devices, cause and effects, illustration and evidence. Write the main idea, definition, transitional devices, cause and effect, illustration and evidence is on your notebook. So, first we will discuss what is the main idea. What was the main idea of the text? We have read the text of Unit 5. So, the main idea could be that in the end of the lesson, the farmer realized his foolishness and put down his axe, and he decided not to cut down the tree because it can provide many lovely things to him and his child too. And he wanted to give the same childhood to his son that he had. It could be its main idea. And the definition would be that he understood that the tree was home to many lovely animals that provided him so many things, and he wanted his little boy to have the childhood that he had. Now let's discuss what the transitional devices are. Look here, the transitional devices or words in English like with this. When we emphasize on something, undoubtedly, unquestionably, obviously, you have seen so many transitional devices in your text. Especially, clearly, importantly, absolutely, definitely, indeed, it should be noted. When we add something, along with, apart from this, furthermore, also to, besides, in addition, and when we have a contrast in any situation or in words like unlike, nevertheless, on the other hand, nonetheless, despite, in spite of, in contrast, and in order to something, following, at this time, previously, you have seen all these transitional devices in your text. So you have to read the last two paragraphs of the story and identify any transitional devices you can find. Spot it out and write it in your notebook. And the cause and effect of that paragraph. At the end, he understood that the tree was home to many lovely animals that provided him so many things, so he threw away the axe and decided not to cut the tree. And the illustration evidence, what could be, if the farmer had not found the beehive, they would have been homeless by now. All the animals would be homeless and they continued living happily in the old apple tree. So you have to write this in your notebook. Give it a read and identify all the things we have just discussed now and write it in your notebook. The section B here, write a paragraph in first person. I, the pronoun I. You have to put yourself in this as a narrator of the story. The worst dream I had. Describe event in sequential orders. Use specific adjectives and adverbs. The specific adjectives we have discussed. Use appropriate tense and appropriate transitional devices. Transitional devices जो भी हमने डिस्कस किए, जितने भी transitional devices आप इसका यूज कर सकते हैं. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का यूज करके आपने नैरेटिव पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने लिखना है द वर्स्ट ड्रीम आई हैड. अब वर्स्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की. बदतरीन ख्वाब जो मैंने देखा, तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर. सारे जितने भी इवेंट्स आपने देखे उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ,
देन इट हैपन फाइनली। ये क्या है, आपकी ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज भी आ जाएगा इसमें, और स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स, जितने भी अच्छी डिस्क्रिप्टिव वे में आप लिखेंगे एडजेक्टिव्स का यूज करके, उतनी ही आपकी नरेशन अच्छी होगी। और एडवर्ब्स का भी आपने यूज करना है कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ और किस टाइम में, किस मैनर में हुआ और किस डिग्री तक हुआ। एडवर्ब जो के वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब के बारे में और बताते हैं कि कौन सा काम किस टाइम पे हुआ, कहाँ पर हुआ, किस फ्रीक्वेंसी में हुआ, किस हद तक हुआ, कौन सी डिग्री तक हुआ और कैसे हुआ। तो ये सारे आपके एडवर्ब में आ जाएंगे। और जब आप अपना पैराग्राफ लिखेंगे इन फर्स्ट पर्सन, एज अ फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, तो आप इन सारी चीजों का यूज करेंगे। स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स में आप अपने इसमें कंपैरेटिव डिग्री भी यूज कर सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री भी यूज कर सकते हैं, और जितने भी एडजेक्टिव्स हमने डिस्कस किए वो आप उसका यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का भी मैंने आपको बता दिया। और एप्रोप्रिएट टेंस, आपने पास्ट टेंस यूज करना है, क्योंकि आई हैड है, आप देख चुके हैं ड्रीम, अब आपने उसको डिस्क्राइब करना है, तो पास्ट सिंपल का यूज आप कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। आई हैड आपने देखा है, आई हैड जब आ जाएगा तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, जो चीज पास्ट में मुकम्मल हो चुकी है। द थिंग, द एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन अ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड यूज ऑल द थिंग्स that I told you. This is your homework from summer pack. You have to write a simple letter to your aunt informing her about the arrival of your brother in Pakistan. आंट को लिखेंगे, आंट आपकी क्या फैमिली में आती है, तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर होगा। इनफॉर्मल लेटर में हम कैसे करेंगे, पहले एड्रेस लिखेंगे, आपने अपना एड्रेस लिखना है इसमें, उसके बाद डेट लिखनी है, देन स्टार्ट लेना है डियर आंट या लविंग आंट, जो भी आप लिखना चाहे, हाय आंट, हेलो आंट, नाम भी लिख सकते हैं उनका, कॉमा डालना है, फिर ग्रीटिंग्स लिखनी है, आई होप यू आर फाइन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई डिडंट हियर यू दैट डे और सिंस दैट डेट, सो मैनी डेज, जो भी आप लिखना चाहें। और फिर मेन कॉन्टेक्स्ट की तरफ आ जाएंगे, उनको इन्फॉर्म करना है कि आपका भाई पहुंच रहा है पाकिस्तान, कहीं बाहर गया हुआ, आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, तो वो पाकिस्तान पहुंच रहा है। आपने अपनी आंट को इन्फॉर्म करना है लेटर के जरिए। और आखिर में आपको लिख सकते हैं योर लविंग नेफ्यू, और अपना नाम लिखना है आपने। टिल नेक्स्ट लेसन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।